Good morning, my dear students. Myself, Dr. Grish Goyal, Assistant Professor, Department of Agronomy, School of Agriculture, IITM University, Gwalior. Students, I hope you all are good and stay at home safely. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और आप अपने से बड़ों का ज़रूर ख्याल रख रहे होंगे. Students, today I am going to start our subject MSc AG Agronomy of major field crops Kharif. Students, so let's start our topic about cultivation of soybean crop part 2. Okay, students, I will introduce all cultivation practices part by part. जैसा कि मैं पार्ट बाई पार्ट लेके आता हूँ. इससे पहले सोयाबीन क्रॉप पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है. हो सकता हो पार्ट 3 भी आ सकता है. So students, I will introduce all content one by one, and first introduction, second deep of sowing, and third irrigation, and next soil and climate requirement, and next nutrient management, and next weed management, next pest and disease, and next harvesting and yield, and next outcome, and then references. Okay, so students, before starting the topic, I want to telling you about some points of introduction of soybean crop. Okay, so students, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूँ सोयाबीन. पर्टिकुलर नेम ऑफ सोयाबीन क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन मैक्स. फैमिली क्या है? फेविएसी. ओके, सो दिस इज इस टाइप में दिखता है जो आपको इमेज शो हो रहे हैं स्लाइड पे. 2 इमेजेस शो हैं स्लाइड पे. एक जो हमारा फील्ड पे जो हमारा प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार का जो है, और फर्स्ट और सेकंड है जो ग्रेन्स है, जो मतलब थ्रेसर हुआ है. फाइनल जो हार्वेस्टिंग होगा थ्रेसर होगा. ग्रेन्स फॉर्मेट में, ये प्लांट फॉर्मेट में, ठीक है, इस तरह दिखता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वांट टू टेलिंग यू अबाउट सम पॉइंट्स ऑफ सोयाबीन क्रॉप. इंट्रोडक्शन सोयाबीन. सो स्टूडेंट्स, soybean is considered highly nutritive crop. Additionally, it is high yield potential. Soybean is known as the golden beans, okay, and versatile crop because of its several use. Students, it is an excellent source of protein and oil. Students, it contains about 43% of food quality protein and 21% carbohydrates and 5% minerals. Next 8% moisture, 20% fat, 4% fiber, and reasonable amounts of vitamins. Students, soybean is considered as a rich source of protein because it contains 43% protein as against 7% in rice and 12% in wheat and 10% in maize and 25% in other pulses. Okay. So students, soybean protein is rich the valuable amino acid lysine in which most of the cereal are deficient. Okay, so students, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है. इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा जो जैसा भी मैंने बताया. स्टूडेंट्स, सोयाबीन कॉल्ड एज गोल्डन बीन्स इज बिलोंग्स टू legume family. It is a native of East Asia. It is rich source of protein, also excellent source of fiber. Oil extract from soybean contain small amount of structured fat in. Okay, so students, so this is a introduction. So next हमारा है deep of sowing. ओके, नेक्स्ट कंटेंट है हमारा डीप टॉप सोइंग. सो स्टूडेंट्स, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ डीप टॉप सोइंग एंड दे आर डिफरेंट जोन. दे आर 5 जोन: नॉर्थ हिल जोन, एंड नॉर्थ प्लेन जोन, एंड नेक्स्ट है सेंट्रल जोन, एंड नेक्स्ट है साउथर्न जोन, एंड नेक्स्ट है ईस्टर्न जोन. ओके, सो दे आर डिफरेंट जोन. एंड स्टूडेंट, फर्स्ट नॉर्थ हिल जोन एंड डीप टॉप सोइंग 3 to 5 सेंटीमीटर. ओके,
they are same they are different zone and same the depth of sowing all zones. ओके, दो 3 से 5 सेंटीमीटर। नॉर्थ प्लेन जोन में कितना है 3 to 5 सेंटीमीटर। सेंट्रल जोन में कितना है 3 to 5 सेंटीमीटर। साउथर्न जोन में कितना है 3 to 5 सेंटीमीटर एंड ईस्टर्न जोन में कितना है 3 to 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट तो हमारा डीप ऑफ सोइंग है जो हमारे सोयाबीन क्रॉप में जो जो डिफरेंट टाइप जोन दिए हैं उन सभी जोनों में डीप ऑफ सोइंग गहराई सेम है। सेम हम लोग सेंटीमीटर पे हम लोग सोइंग करते हैं। ठीक है, कितना है 3 to 5 सेंटीमीटर पे सोइंग करते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के जॉइन है, हम इन जॉइनों में सेम डीप में गहराई में सोइंग करते हैं। कितने 3 to 5 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंटेंट है हमारा फिर इरिगेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स ओवरऑल क्रॉप रिक्वायर्ड 3 to 4 irrigation required. Irrigation at time of pod filling stage is necessary. Students, water stress at this period will affect yield directly. Students, apply irrigation depending upon rainfall condition. No irrigation required in good rainfall condition. Okay, so this is irrigation. So next content is students soil and climate requirement. Okay, so students, soybean grow in a tropical, subtropical and temperate region, but large area is found in warm, temperate and subtropical regions. Students, ideal temperature for its growth range from 25 to 30 degrees Celsius, but growth is retired at temperature of greater than 35 degrees Celsius or below 10 degrees Celsius. It is short day plants. Students, growing it in longer day lengths prolong its flowering time. Students, it is highly sensitive to water logging. It is successfully grow a range of well-drained soil like sandy loam, clay laterite and even clay loam or sandy loam soil. Students, provide they have a pH of 6.7 say for 7.5. Okay, so this is a soil and climate requirement. Okay, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा कंटेंट है न्यूट्रेंट मैनेजमेंट. ओके, so students, basically soybean being a leguminous crop extract most of its nitrogen requirement through biological fixation. Students, provided ideal conditions are available in the soil, a mandatory treatment of seed with ribosium gypsum culture at the rate 500 to 600 gram per hectare. Students, along with starter dose of nitrogen at the rate 20 say 30 kg per hectare is necessary of good yield. Students, similarly a doses of 40 say 50 kg phosphorus per hectare and 40 kg potassium per hectare is necessary for the ideal growth of soybean. Students, light soil may be demand application of nitrogen in two split sowing plus 30 DAS. DAS में तो होता है इसमें डेट आफ्टर सोइंग, वो वाला डेस नहीं है संडे मंडे वाली, वो है DAS में डेट आफ्टर सोइंग. इन ऑल अदर सिचुएशन ऑल द फर्टिलाइजर आर गिवन इन one vessel dose in recent year application. Zinc sulfate at the rate 120 kg per hectare offers additional benefits. Okay, so student, this is a nutrient management. ठीक है, so next content है हमारा weed management. Okay, so students, it is a slow growing crop in the initial stage and hence the critical period for weed control is extended up to 45 days. Okay, so control of weeds in intercultivation at the rate 50 DAS. स्टूडेंट्स फिर से यहाँ पे DAS आ गया. DAS means date after sowing and 45 days after sowing is more cost effective. Students, provided the ideal soil moisture
permits such as operation hand weeding in rarely adopted. However, in situation of high weed intensity, herbicide like allochlor 50 EC at the rate 1 at the rate 2 per hectare may be applied as pre-emergence herbicide. Okay, so students, this is weed management. Okay, तो नेक्स्ट हमारा है plant protection. Okay, so students, plant protection. Okay, so there are different type of plant protection, insect and disease. So first of all students, pest and disease different type है, ठीक है. So students, फर्स्ट है हमारा वाइट फ्लाई. ओके, कौन सा हमारा वाइट फ्लाई. Okay, so students, it is a leaf sucking insect which can be reduce the triangulation of leaves and result into poor growth of the crop. Students, severely affected leaves may get defoliate. It may be a serious pest causing heavy damage. Students, it can be controlled by the spray of metastox or oxidamycin methyl at the rate 0.1% repeatedly at 20, 30, 40 and 50 DAS days after sowing. Okay, so this is white fly. So students, नेक्स्ट हमारा स्टेम फ्लाई. ओके, क्या है स्टेम फ्लाई. Students, it is a serious and devastating pest of soybean in North India. The maggots bore of the stem from top and the plant dries up, the resulting students into complete failure of the crop. The affected plant may show partial or complete drying of leaves. Students, it can be controlled by applying folate at the rate 10 kg per hectare or carbofuron at the rate 30 kg per hectare to soil. Okay, so student, this is a stem fly. So next हमारा गिडिल बीटल. स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, गिडिल बीटल फीमेल्स मेक 2 parallel girdle of stem and lay the eggs. Students, which hatch and young one feed on the initial tissue to causes wilting of wintering to leaf of branches. Students, it can be controlled by the spray of dimethoid at the rate 1 ml per liter. Okay, so student, this is गिडिल बीटल. So next हमारा है बिहार हरी कैटरपिलर. Okay, so students, it is a serious leaf feeding insect and it skeletons the leaf to cause the serious reduction in yield. Students, it can be controlled by the spray of क्यूनोफोलास at the rate 1 ml per liter के हिसाब से हम लोग स्प्रे इसमें कर सकते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा लीफ माइनर. ओके, क्या है लीफ माइनर. सो स्टूडेंट्स, लीफ माइनर. ओके स्टूडेंट्स, लीफ माइनर पेस्ट ऑफ ग्राउंडनट कैन डैमेज सोयाबीन इन द सिमिलर वे लाइक ग्राउंडनट डू. Students, it can be controlled by the spray of quinofolas at the rate 1 ml per liter. Okay, so this is a leaf miner. So students, next है seedling root. Okay, so students, it result into failure of germination and the seed roots inside the soil. Students, it can be controlled by the seed treatment with theorem at the rate 4.5 ग्राम पर kg सीड्स के हिसाब से हम लोग सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ओके, सीडलिंग रूट. ओके, सो स्टूडेंट्स, सो दिस इज ए पेस्ट एंड डिजीज. ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा कंटेंट है ये काफ़ी अच्छा है. इसमें से कई सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स फटअप होते हैं जो आपके इसमें से इंसेक्ट पेस्ट से कितने 5-6 हैं. ठीक है, तो इसमें सब कई सारे क्वेश्चन फटअप होते हैं. तो मैं आपके एग्ज़ाम में क्विज में भी पूछ सकता हूँ, तो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं इसमें से. तो अच्छे से इसको रीड करिएगा.
ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंटेंट है हमारा हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड। ओके, कैसे इनको हार्वेस्टिंग और ईल्ड है देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हार्वेस्टिंग ईल्ड, to whole plant is cut, the base not left in the field for 2 to 3 days, and later they are beaten up or threshed in threshing machine to separate the seeds. Students, then the seeds are sun dried for 5 to 6 days on yard and stored. After the moisture level in 14% or less, students, a yield of around 10 to 15 quintal per hectare under rainfall and around 30 to 35 quintal per hectare under irrigated condition may be expected. Students, so this is a harvesting and yield. Okay, so students, नेक्स्ट हमारा आउटकम। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड। सो क्या हमारा आउटकम निकला स्टूडेंट्स? सोयाबीन कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द इंडियन एडिबल ऑयल पुल। स्टूडेंट्स, presently soybean contributes 43% to the total oil seed and 25% to the total oil production in the country. Students, currently India ranks 4th in respect to production of soybean in the world. So this is outcome. Okay, so students, this topic is finished. Okay, तो ये कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन क्रॉप पार्ट 2। ओके, इससे पहले पार्ट 1 लेके आया था और ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आप इसे अच्छे से वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही होगी तो आप मेरे से अवश्य पूछें। ठीक है ना? तो आई होप आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पूछेंगे। इसको कोई प्रॉब्लम लगे तो वेबिनार के थ्रू कभी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है ना? तो अगर किसी को कुछ डाउट लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं गलत भी हो सकता है, तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ठीक है, आप इसको आई होप ज़रूर पढ़ें। ठीक है ना? तो थैंक यू स्टूडेंट्स।